All right. Hi, everyone. A very, very good evening to all of you, and welcome back once again to the series of PIB Current Affairs. So, my dear friends, first of all, I'm going to wish you a very, very happy new year. May God bless you with जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपने टारगेट रखा है, आई विश कि आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट हो. मे गॉड ब्लेस you with all the happiness and all the success in the life. So from today we are starting the PIB current affairs for the year 2026. This series is going to be, it is going to be conducted on and on and on till the last examination of the year 2026. So please give me a thumbs up if you guys can see me properly and can hear me properly. And as usually last year in 2025, PIB had played a very, very important role in all these regulatory bodies examinations, and of course in 2026 as well it is going to play it is definitely going to play an important role in your examinations. And not only PIB, my dear friends, I myself provide direct guidance to all the students who ask anything from me, through my telegram channel. जो भी मेरा telegram channel है, जो भी telegram पे students आते हैं मेरे से सवाल पूछते हैं, and I welcome and I question them in all the possible best ways, right? Yeah, very happy new year, my dear friends. So please give me a thumbs up if you guys can see me properly and can hear me properly. Yes, I think I have some thumbs up. All right, so let's wait for a few more seconds so that other people can also join, and I have two announcements to make. दो announcements है छोटी छोटी जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है. तो आई होप आप लोगों ने न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कम बैक टू योर स्टडीज. जो भी आपने टारगेट रखा है बस उसके लिए कंसिस्टेंट होके पढ़ते रहना है. दैट इज द ओनली वे टू क्रैक एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं दैट why is it so that average students clear the examination? It is not about being average or it is not about being intelligent in these competitive examinations. It is about being consistent. जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे उतने ज्यादा चांसेस दोस्तों आपके हैं टू क्रैक दिस पर्टिकुलर और फॉर दैट मैटर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, और कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है. मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस वीडियो को जाके देखें. मैंने उसमें एक रोड मैप दिया था जिसमें मैंने आपके मेंटल हेल्थ की भी बात करी थी. कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है दैट आप अपने आप को बर्नआउट की सिचुएशन में ले आओ या फिर आप अपने आप को आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब हो जाए. ऐसा नहीं करना. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप पढ़ेंगे, आप आउटकम ओरिएंटेड काम करेंगे, आप नंबर ऑफ आवर्स ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे. यू आर गोइंग टू वर्क इन अ वे दैट आप आउटकम की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है रादर देन कि नंबर ऑफ आवर्स कितने आपने फॉलो करे. ठीक है जी. चलिए, तो अनाउंसमेंट्स हैं दो छोटी छोटी. पहली अनाउंसमेंट दोस्तों ये है दैट एवरी मंथ आई एम गोइंग टू टेक अ सेपरेट सेशन of all the news या फिर all the questions which can be asked in the descriptive format. ठीक है, जितने भी descriptive questions आ सकते हैं from the PIB current affairs, I am going to take one session monthly for all those. ठीक है, पहला अनाउंसमेंट तो ये हो गया. तो पहला अनाउंसमेंट क्या है? एवरी मंथ में एक बार आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन, अ डिस्क्रिप्टिव सेशन, जिसमें हम उस महीने के जितने भी क्वेश्चन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है उनको क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों के थ्रू पढ़ेंगे. पहला ये हो गया. दूसरा अनाउंसमेंट दोस्तों ये है दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च आई विल बी इंक्लूडिंग द जनरल करंट अफेयर सेक्शन इन पीआईबी करंट अफेयर्स क्लासेस एज वेल. क्योंकि मैं आपको बताऊं, आफ्टर पीआईबी करंट अफेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा जनरल करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर हो रहा होता है. तो जो बाकी बचा कुचा होगा, बैंकिंग एंड इकोनॉमी हो गया, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, वो सब भी मैं इस क्लास के अंदर इंक्लूड कर लूंगा ताकि आपको इधर उधर न जाना पड़े एंड यू विल हैव वन सॉलिड सोर्स जहां से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा. बाकी आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स माधव सर पढ़ाएंगे जिसमें वो फाइनेंस के आरबीआई के सर्कुलर और आरबीआई के ऑफ कोर्स पूरी आरबीआई की वेबसाइट और जितनी भी फाइनेंस करंट अफेयर्स है उसको इन डेप्थ कवर करने वाले हैं. ठीक है जी. चलिए, आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये दोनों अनाउंसमेंट्स क्लियर हैं आप लोगों को. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों PIB current affairs for the 1st and 2nd January 2026. चलिए स्टार्ट करते हैं with the very first question that is based on Viksit Bharat Ji Ram Ji Act. The people who are going to write the NABARD Grade A mains examination should cover this particular act very very carefully and very very efficiently because यहां से आपका descriptive question आ सकता है. ठीक है जी.
All right. So abhi ab let's study first and then I'll take your questions, don't worry. So now this particular act, Viksit Bharat G Ramji Act 2025, I hope you guys have heard that Viksit Bharat G Ramji Act 2025 has now replaced the MG Narega Act, right? MG Narega ko isne replace kar diya hai, and now we have in force the Viksit Bharat G Ramji Act of 2025. It has replaced Manrega. So we need to study about this particular act in very much detail. Whichever examination you are preparing for, this particular act, my dear friends, is really very important for you, right? So let's start. और जितना डिटेल में हम पढ़ेंगे वहां उतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा. I can guarantee that. So the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin, that is the full form. You need to remember the full form as well because it can be asked in your exams. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Viksit Bharat G Ramji Act 2025 has been enacted by the Government of India. But before going to the features of the act, we'll try to understand two things. Number one, how this rural employment guarantee thing has evolved in the country, number one. And number two, we'll also talk about what was the rationale behind implementing or enacting this particular act. Problems क्या थी मनरेगा में, क्यों सरकार जी राम जी एक्ट लेके आई. ठीक है, तो सबसे पहले if we talk about the evolution of rural employment in India, so my dear friends, this India's wage employment initiative had been progressed. It has been through a lot of initiatives, like in the year 1960s we had rural manpower program. In the year 1971 the government launched crash scheme for rural employment. उसके बाद 80s और 90s में जब हम चलते हैं तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आ जाता है, एंड देन सिमिलरली रूरल लैंडस्केप एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. ठीक है, then after that in the year 1993 these two programs, national rural employment program and rural landless employment guarantee program, these two programs were merged in the year 1993 to form Jawahar Rozgar Yojana, right? And which was later consolidated into Sampurna Gramin Rozgar Yojana in the year 1999. ठीक है, 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर सरकार ने इसी बीच कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स लॉन्च करी थी ताकि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और फूड इनसिक्योरिटी है हमारे देश में उसको केटर किया जा सके. द गवर्नमेंट इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट लॉन्च्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स टू केटर टू द seasonal unemployment and food insecurity in the country. These were employment assurance scheme and the food for work program, right? Employment assurance scheme and the food for work program, this particular scheme was implemented, right? Then a major breakthrough came with the Maharashtra Employment Guarantee Act of 1977, right? Maharashtra enacted Maharashtra Employment Guarantee Act of 1977, which introduced this concept of a statutory right to work, right? मनरेगा used to provide a statutory right to work, right? और वो जो आइडिया था वो कहां से आया था? That idea came from Maharashtra Employment Guarantee Act of 1977. And my dear friends, the experiences of Maharashtra Employment Guarantee Act of 1977 culminated in the enactment of मनरेगा in the year 2005. 2005 में फिर क्या आता है? मनरेगा आता है, प्रोवाइडिंग अ नेशन वाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? एक लीगल फ्रेमवर्क मनरेगा ने क्रिएट किया फॉर प्रोवाइडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इंडिया. क्लियर? उसके बाद हम आते हैं रैशनैले फॉर दिस एक्ट. ये जो एक्ट सरकार लेके आई है जी राम जी एक्ट, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों लेके आई सरकार? तो देखो ऐसा था, अभी कुछ दिन पहले काफी समय से एक्चुअली द गवर्नमेंट वाज डूइंग द मॉनिटरिंग ऑफ मनरेगा, राइट? And it was found that the work was not found on the ground in some cases. Number one. Number two, the expenditure was not matching the physical progress. ठीक है, खर्चा तो हो रहा था लेकिन उतनी physical progress visible नहीं थी, right? Number three, use of machines in labor intensive works, and that is against the soul of Manrega. Why? Because Manrega had to provide द लेबर इंटेंसिव वर्क. अगर मशीन यूज करने लगेंगे तो वही नौकरी कैसे देंगे, राइट? एंड frequent bypassing of digital attendance system. I hope you guys remember that under Manrega there used to be a system where the laborers had to punch in through the
digital attendance system. So that was also being, regularly, being passed out. Okay. So इसके लिए इन रीजंस की वजह से, ठीक है, क्या हुआ कि मिस अप्रोप्रिएशन जो हो रही थी, दैट एक्यूमुलेटेड, misappropriation accumulated, and only a small proportion of households were able to complete the 100 days of employment in the post pandemic period. पैंडेमिक के बाद से केवल कुछ परसेंट, है ना, कुछ परसेंट जनता ऐसी थी, कुछ परसेंट हाउस होल्ड ऐसे थे जिनको 100 दिन का काम जो कि मनरेगा के अंदर गारंटी था, केवल कुछ हाउस होल्ड्स को मिला. तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ऑन वन हैंड मनरेगा इज गारंटिंग 100 days ऑफ वर्क, एंड ऑन द अदर इट इज बीइंग. आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? यस, आई थिंक इट्स फाइन नाउ, इट्स ओके नाउ. इज इट ओके नाउ? ठीक है, चलिए. Alright, so these trends, my dear friends, indicated that while delivery systems under मनरेगा improved, but the overall architecture जो था मनरेगा का, that was compromised, that has reached its limit, right? वो उसकी अब की लिमिट पे पहुंच चुका है, and that is why it was realized that it, you know, there is a need of हमें उसको रिवैम्प करना पड़ेगा. ठीक है. सो ऑल्सो एक और रीजन था, मनरेगा वॉज बिल्ट इन 2005. ठीक है, मनरेगा वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2005, एंड दैट टाइम अगर हम उस समय के रूरल इंडिया को और आज के रूरल इंडिया को कंपेयर करेंगे, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द देन रूरल इंडिया एंड द करंट रूरल इंडिया, बिकॉज एट दैट point of time in 2011-12 there were the poverty levels declined from 27.1% in 2011-12 to 5.3% in 22-23, and it was also supported by rising consumption, improved financial access and expanded welfare coverage. हमने देखा था इन द लास्ट ईयर एज वेल, हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी पीआईबी में, हमने समझा था उसमें कि कैसे रूरल कंजम्पशन ने हमारे देश में जो इन्फ्लेशन था उसको कंट्रोल करके रखा था. ठीक है. सो दिस वाज द रीजन, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिग रीजन कि उस समय का जो आर्किटेक्चर था रूरल इंडिया का, दैट वाज, उस समय पॉवर्टी ज्यादा थी, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कम था, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, फाइनेंशियल एक्सेस नहीं था. तो उस समय के हिसाब से मनरेगा को डिजाइन किया गया था. सो नाउ देयर वाज अ नीड टू रिवैम्प मनरेगा एंड क्रिएट अ न्यू पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है. एंड दिस विकसित भारत जी राम जी एक्ट responds to this context by modernizing the rural employment guarantees, strengthening accountability, and aligning the employment creation with long-term infrastructure and climate resilience clause. मनरेगा में मोस्टली क्या होता था, गड्ढे खोदने के पैसे सरकार देती थी, बट नाउ दिस जी राम जी एक्ट इज वे अबव देन दैट, एंड द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द वर्क फॉर क्रिएशन ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एसेट्स, राइट. चलिए आगे चलते हैं फीचर्स पे. तो बहुत सारे फीचर्स तो मनरेगा वाले सेम है, कुछ ऑफ कोर्स डिफरेंस है. सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स अ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी डेज, 125 days. मनरेगा यूज्ड टू प्रोवाइड 100 days of employment. Now this act will provide 125 days of wage employment per rural household. ठीक है, किसको मिलेगा? रूरल हाउसहोल्ड. The employment will be provided to the rural household in each financial year to such rural households whose adult members, which members, adult members, volunteer to undertake unskilled manual labor work. ठीक है, कैसा काम होगा? अनस्किल्ड होगा. इट विल बी एन अनस्किल्ड वर्क, इट विल बी अ मैनुअल वर्क, इट विल बी अ labor work. Yeah, I am explaining in English only. Dear Ganesh, I am explaining in English only. I am just using a few words in between Hindi, which which doesn't mean that I am explaining anything extra in Hindi, right? Everything is being explained in English. Don't worry. All right. So now this work, my dear friends, is going to be provided to all the rural households, to the adult households who are willing to undertake the manual unskilled labor work, right?
Remember this. No work period. There is a no work period. This is something new in G Ramji Act. So there shall be a 60 days no work period. And this provision has been created to ensure the availability of agricultural labor during peak sowing and harvesting season. So what used to happen that is that during the peak sowing and harvesting season, there used to be shortage of agricultural laborers because the people who are engaged in the Manrega works, right? So now the government has created a 60-day no work policy under G Ramji Act, which will ensure the availability of agricultural laborers during the peak sowing and harvesting season. All right. And these days shall be notified by the state governments. The state governments will be responsible to notify these 60 days. All right. Then the wages, my dear friends, are going to be disbursed on a weekly basis. The wages are going to be disbursed on a weekly basis, and in any case, the disbursement. यार वॉइस आ रही है यार, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी. All right. So the wages shall be disbursed on a weekly basis, and in any case, it should not be delayed more than 15 days. यानी कि 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए. Right? It means within 15 days, the wage payment shall be made. Right? But in any case, if the payments are not made within 15 days, then the workers will be provided an interest rate on their wage payment. And how much percent of interest they are going to get? 0.05% of extra as interest on their dues. जो कि कुछ नहीं, it will be around 5-6 rupees or maybe 4 rupees, right? Because the wages of course are not very much कि ये 0.05% extra देने से कुछ फर्क पड़े. All right. And these wages, my dear friends, are to be notified by the central government as it was used, as it was done under the Manrega Act. All right. Let's move ahead. Unemployment allowance, the same as as it was there in under Manrega. So the unemployment allowance is provided if the work is not allotted within 15 days of application of work. So if I have applied for the work and if the work is not allotted to me within the 15 days of application, then I will be getting an unemployment allowance, right? And this allowance, my dear friends, is going to be decided by the central government. The allowance shall be paid by the state government. ठीक है, पे कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, बट इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? Again, at least 1/3 beneficiary shall be women, the same as that of Manrega. Moving ahead, the work, my dear friends, shall be allocated within 5 kilometers of the radius of the residence of the beneficiary, right? If not, अगर ऐसा नहीं होता है, if it doesn't happen, then the beneficiary shall be provided with 10% extra wages, right? So let's say if the per month per day wage is 200 rupees and the work is allocated at a place which is more than 5 kilometers from the residence of the beneficiary, then in that case 10% extra, yani ki, which means 220 rupees will be provided, right? Okay. Then there has, the government has decided certain priority areas, ठीक है, जिसमें काम होगा. So these are water security through water related works, number 1. Number 2, core rural infrastructure. Number 3, livelihood related infrastructure. And number 4, special works to mitigate extreme weather events. Special works to mitigate extreme weather event. All right. Asset aggregation का काम होगा. All the assets which are going to be created under G Ramji Act, these will be aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. So there is going to be a stack that will be created by the Ministry of Rural Development, and all the assets will be aggregated through the geo-tagging on the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. All right. There will be a decentralized planning. The government will support, under the G Ramji Act, there will be decentralized planning, and it will be done through the Viksit Gram Panchayat plans, right? Type of the scheme, it will be implemented as a centrally sponsored scheme. It will be implemented as a centrally sponsored scheme, and per year cost will be 1,51,280 crores, right? अब ये मनरेगा से ज्यादा कॉस्ट है, ऑफ कोर्स, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क भी तो ज्यादा है, राइट? नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क भी ज्यादा है. 1,51,282 crores is going to be the per year cost of implementing this particular scheme.
right? And the cost will be shared between the center and the state governments. Center, state, in case of normal state, it will be 60-40. 60% by central government, 40% by state government. If it is the case of northeastern and Himalayan state, center will provide 90%, and that particular northeastern and Himalayan state will provide 10%. And if it is the case of UT without legislature, 100% cost will be borne by the central government. All right. Next, monitoring. Monitoring कैसे होगी? That is also very important. सबसे पहले, first of all, we will have a central and state Gramin Rozgar Guarantee Councils, right? Central and state Gramin Rozgar Guarantee Councils. What these councils are going to do? They will provide policy guidance, review implementation, and strengthen the accountability. इनका काम क्या होगा? Majorly, their work will be to, provide policy guidance, to review the implementation, and of course to strengthen the accountability. Number 2 pe, we will have a national and state steering committees. These committees are going to drive the strategic direction, convergence, and performance review. Then we'll have Panchayati Raj institutions which are going to lead the planning, the decentralized planning through the Viksit Bharat Gram Panchayat plans, right? There will be a district program coordinators and program officers. These will have the responsibility of manage the planning. They will manage the planning, compliance, payments, and social audits. And last but not the least, Gram Sabhas, my dear friends, are going to play a strengthened role in conducting social audits and ensuring transparency throughout the implementation of this particular scheme. Clear? So that is all for Viksit Bharat. Ji Ram ji, let's come back to the question and let's try to solve it. I hope, my dear friends, the entire scheme is clear. I hope, my dear friends, the entire scheme is clear. और आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, don't worry. We have done this Viksit Bharat Ji Ram Ji Act. After this, we'll cover one more scheme which is very important, recently launched, and then we'll finish up the class. Okay, incorrect statement identify करना है. The Act guarantees 125 days of wage employment per rural household in each financial year to such rural households whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work. Correct. There shall be a 60-day no work period to ensure the availability of agricultural labor. Correct. If the wage payments are not made within 15 days, workers will get not 5%, 0.05%. And wages shall be decided by the central government, while the unemployment allowance shall be decided by the respective states. No, both wages and unemployment allowance are going to be decided by the central government. So 3 and 4 will be the right answer because we need to identify the incorrect statement. And while marking the answers in the examination, my dear friends, please do remember whether you have to find the correct statements or the incorrect, because you are definitely going to have the options of both. दोनों का ऑप्शन मिलेगा आपको. देखो 1 and 2 भी है, 3 and 4 भी है, तो जल्दी जल्दी में 1 and 2 में मार्क नहीं करना. चलिए नेक्स्ट. If you want to have the PDF of this class, my dear friends, just scan this QR code, join the Telegram channel, and right after the class I will upload the PDF. ठीक है? And there is only one way to get the PDF, and that is to scan this QR code, joining the Telegram channel, and getting the PDFs. Very simple. Next is consider the following statements with respect to the credit guarantee scheme for exporters and identify the correct statement. This scheme, my dear friends, has been recently launched, and today we are going to talk about this particular scheme in detail. We have covered this scheme, but only that part which was provided in PIB. But now, since the new cycle has been started 2026, we need to cover all those schemes जो हमने PIB में पढ़ी थी, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? और ये न्यूज में भी थी, इसलिए हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे. राइट? तो न्यूज में क्यों थी? बिकॉज द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय DFS हैज बीन मेड ऑपरेशनल सिंस 1 दिसंबर 2025. ऐसा सरकार ने एक PIB रिलीज में 1 तारीख को बोला. ठीक है? तो बोला तो चलो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं. राइट? दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन वन ऑफ द PIB रिलीजेस ऑन 1 January. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कीम. ठीक है? So what is this scheme? Credit guarantee scheme for exporters. Of course, as the name says, the scheme provides credit guarantee to the exporters on their loans which they take for their operational efficiency, for their working capital, for their capital enhancement. जिस भी पर्पस के लिए वो लोन ले रहे हैं, of course the primary reason must be to enhance the exports, right? So the loan which the MSMEs or any kind of exporters are taking, the government is going to provide the credit guarantee on those loans through this particular scheme, right? That is the objective, to provide guarantee coverage for credit assistance to eligible exporters, both direct and indirect. समझ में आ जाएगा, don't worry, including
eligible MSME exporters. Right, it was launched last year 2025, and it is being implemented by the Department of Financial Services of the Ministry of Finance. Right, not the Ministry of Commerce and Industry, not the Ministry of MSME. कोई नहीं है, कौन है? Ministry of Finance है, Ministry, याद रखना. This is very important because most of the credit guarantee schemes are being implemented by the Ministry of Commerce and Industry, but this one is being implemented by the Ministry of Finance. All right. Who are the eligible exporters? So there are two kinds of exporters. The one who are directly involved in exporters, which means, let's say I am exporting this particular screen, right? So I'm a direct exporter, and let's say you are providing me the components of creating this particular screen, and I am exporting this particular screen. So you will be the indirect exporter. Clear? मैं ये स्क्रीन बना रहा हूं और मैं बना के इसको भेज रहा हूं, ठीक है? So I am the direct exporter, but you are providing me the, you know, important or crucial inputs for creating this particular screen. So you are the indirect exporter. Clear है? तो दो तरीके के. Direct exporters में the MSME units with at least 5% of their turnover through exports are eligible. ठीक है? Non-MSME units with at least 20% of their turnover through exports. अगर MSME units है तो 5% उनका टर्नओवर एक्सपोर्ट्स के थ्रू आना चाहिए, और नॉन एमएसएमई है तो 20% उनका एक्सपोर्ट्स के थ्रू आना चाहिए. ये तो हो गई मेन बातें. उसके अलावा दिस एक्सपोर्ट टर्नओवर क्राइटेरिया, ये जो टर्नओवर क्राइटेरिया हम कह रहे हैं 5% और 20% का, राइट? द टर्नओवर क्राइटेरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, these can be met in either of the two previous financial years, that is financial year 24 or 25, right? Now this scheme, my dear friends, is till 2025-26, यानी कि 31 मार्च, और मे बी जो इसका कॉर्पस जब तक चलेगा तब तक ही है. So that is why these two financial years, financial 24 or 25, right? And of course the company account should be standard, you know, which means there should not be any kind of NPA in the names of these companies accounts, right? And they should you know, they should bear less than equal to 60 days of overdue as on 30th September 2025. So for example, X is an MSME unit who wants to apply for this particular loan for this particular scheme, right? But it has already taken a loan from a bank Y, which has an overdue of, let's say 80 days का overdue है. Let's say this loan account has an overdue of 80 days. Then this X is not eligible for this particular scheme. Why? Because the scheme says that there must be less than equal to 60 days of overdue as on 30th September 2025. Clear? For indirect exporters, the MSME units who supply at least 30% of their total turnover to eligible direct exporters. वही जो स्क्रीन मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रीन का मेरे को इनपुट दे रहे हो जिससे मैं स्क्रीन बना रहा हूं. So they must supply at least 30% of their total turnover to eligible direct exporters. All right. Then MSMEs must have a valid Udyam registration number. Of course, they must have it, right? What is the duration? So as I told you, until the credit guarantees up to rupees 20,000 crores are provided, or 31st March 2026, whichever is earlier, right? Until guarantees for loans amounting to 20,000 crores are provided, or 31st March 2026, whichever is earlier. दोनों में से जो पहले हो जाएगा, right? What is the quantum of support? The direct exporters, my dear friends, are going to have a financial assistance, or you can say the credit guarantee up to 20% of sanctioned export working capital limits. ठीक है, मान लेते 100 करोड़ का उसको मतलब एक्सपोर्ट करना है तो 20 करोड़ तक के लोन का उसको क्रेडिट गारंटी मिल जाएगा. In case of indirect exporter, it is again up to 20% of the sanctioned working capital limit. Same for both direct exporters and indirect exporters. 20% of the sanctioned working capital limits. The maximum loan amount, my dear friends, is going to be 50 crores per borrower. ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा का लोन अमाउंट नहीं हो सकता. And the tenure of the loan is going to be 4 years fixed. ठीक है, 4 साल fixed है. And this 4 years includes 1 year of moratorium period as well. All right. The interest rate on facility under the scheme, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होगी that will be 1% below existing working capital rate, which is capped at 10% per annum for for banks and financial institutions, and it is capped at 14% per annum for NBFCs, right? मतलब इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता. Alright.
the guarantee cover will be provided 100%. Yani if I am taking a loan of 40 crores, then the guarantee cover will be provided on this entire 40 crores. There is no 90%, nothing 80%, 70% जो कि बाकी schemes में होता है, right? There is no processing fee, there is no guarantee fee, there is no fee at all, not neither processing fee nor guarantee fee. In all the credit guarantee schemes, there is a certain AGF, annual guarantee fee, there is a certain processing fee as well. But here, neither there is a processing fee nor there is a guarantee fee. Who are the eligible lender? All scheduled commercial banks, right? All scheduled urban cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs. ये चार तरीके, यानी कि कौन कौन बाहर हो गए? आरआरबीज नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नहीं है, पेमेंट बैंक्स नहीं है, तो ये तो होते भी नहीं है, ये तो हो भी नहीं सकते, राइट? और इसके अंदर किसी तरीके का कोई एडिशनल कोलैटरल या फिर पर्सनल या फिर कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती. देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिशनल कोलैटरल और पर्सनल और corporate guarantee under this particular scheme to have the benefits of this particular scheme. Clear? So that is all for this scheme. Let's come back to the question and let's try to solve it. Let's identify the correct statement. The scheme is being implemented by DPIT of Ministry of Commerce and Industry. No, a big no. Department of Financial Services of Ministry of Finance. The maximum loan amount per borrower is 50 crores. Correct. 90% guarantee cover shall be provided in the loans. No, we just discussed it is 100%. And the scheme shall be implemented until guarantees of loans amounting to rupees 20,000 crores are issued or 31st March 2026, whichever is earlier. This is correct. So 2 and 4 will be the right answer, option C. Okay. All right, my dear friends, that's it for today's class. I hope all the questions and their explanations are clear. चलते चलते मैं फिर से वो दोनों announcement कर देता हूँ. Number 1, every month I am going to take one descriptive class in which I will be covering all the news from which the descriptive questions can be asked. ठीक है, न्यूज नहीं, एक्चुअली हम क्वेश्चन और आंसर कवर करेंगे. We'll cover it in form of question and answer. And from the month of March, I'm going to include all the general current affairs sections from in this particular section only, so that you don't have to run here and there for the general current affairs as well. Wishing you happy new year once again. I hope to see more people in the live classes. I hope to see large number of people in the live classes. As I always say, मेरा सिर्फ एक ही मेरिट है, that you guys attend the live classes more and more. Thank you very much. And yes, on 6th of January we are going to launch an English batch for RBI Grade B 2026 at 6 p.m. Yes, for January month, take descriptive classes before 25th January. I'll try to do that. Don't worry, deep 5, 4, 6, 7, don't worry, you are not going to have any question from the month of January in NABARD. Don't worry. Cumulatively है यश, it is cumulatively. So for notes, should we make it differently or just save the PDFs? For PIB current affairs, you don't have to make any short notes, because already these notes are in very short format. Just save the PDFs. And to get the PDF, just scan this QR code you can see behind me and just join the Telegram channel and get the PDF. Finance current affairs, I believe, are going to be started from the next week. Of course, Madhav sir is going to continue the finance current affairs class. Just wait and watch. He is recharging himself, and from the next week, definitely he is going to start. I wish you all the best. Zero touch. No, I'm not going to covering. Now I'm not going to cover PIB for the second half of December. यश वहां से कुछ नहीं आएगा. Just don't worry. सी नबार्ड के लोगों को फोमो हो रहा है कि दिसंबर वाला कर ले, जनवरी वाला कर ले. यार देखो, स्कोप ही नहीं है ना उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का. 15 क्वेश्चंस आएंगे ईएसआई में, स्कोप ही नहीं है, तो कितना पूछेंगे? वही पूछेंगे जो ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके हैं क्वेश्चंस. सो डोंट वरी. There will be no descriptive class for NABARD on YouTube. Yes, yes, yes. एक तीसरी अनाउंसमेंट और भाई, government schemes, of course. The government schemes classes are going to be conducted for the year 2026. Maybe from the month of February I am going to start. The dates shall be announced later. You are in dilemma. How can you check the performance?
जीरो टच यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम एट मैशी मनीष। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एट मैशी मनीष। माधव सर की क्लास अगर कल के लिए शेड्यूल्ड है तो हाँ जी, तो फिर माधव सर कल से ही आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। If, तो माधव सर इज कमिंग फ्रॉम टुमारो ओनली। मुझे लगा था कि वो ट्यूसडे से आएंगे, सैटरडे से क्लास शुरू करना नहीं चाहेंगे, तो अगर उनकी क्लास शेड्यूल्ड है तो कल से आ जाएंगे वो, डोंट वरी। स्कीम बता दिया जी मैंने, फेब्रवरी से स्टार्ट करेंगे हम, फेब्रवरी से, मोस्ट प्रोबेबली हम फेब्रवरी से स्टार्ट करेंगे। अभी जरूरत ही नहीं है स्टार्ट करने की, क्या करोगे इतनी जल्दी से स्कीम करके। कैन यू इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल द बैच विद, यार ये सब चीजें आप लोग प्लीज टीम से बात करो, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड्स। गवर्नमेंट स्कीम भैया बता दी मैंने दोस्त। यस, माधव सर इज ऑल्सो हेयर। माधव सर इज ऑल्सो हेयर, भाई माधव सर आ गए हमारे बीच में। तो भैया ऐसा है दोस्तों, फाइनेंस करंट अफेयर्स कल से ही शुरू हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, फाइनेंस करंट अफेयर्स कल से ही शुरू हो रहा है, शाम को 5 बजे। ठीक है, फाइनेंस करंट अफेयर्स एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM फाइनेंस करंट अफेयर्स, एंड एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 PM पीआईबी करंट अफेयर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च आई विल बी इंक्लूडिंग जनरल करंट अफेयर्स फ्रॉम दीज सेशंस ओनली। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स तो हो गया आपका, समझ लो। एंड ये फाइनेंस करंट अफेयर्स की क्लासेस जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पीएफआरडीए, आरबीआई, सेबी, इरडई, इन सब के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई सर्कुलर्स, सेबी के सर्कुलर्स, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, सेबी रिपोर्ट, सब कुछ कवर होती है इसके अंदर। जीरो टच, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बैच ऑन 6th ओनली। नहीं, पिछले साल वाली गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट आपको कवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर विल बी न्यू क्लासेस फॉर द 2026 साइकिल। ठीक है जी, सो चलते चलते माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी रिपीट द अनाउंसमेंट्स अगेन। अनाउंसमेंट नंबर 1, आई एम गोइंग टू टेक वन क्लास एवरी मंथ बेस्ड ऑन दी न्यूज, जहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फ्रॉम वेयर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। वी विल बी having that class in the form of questions and answers. Number 1. Number 2, I will be from the month of March, I will be including the general current affairs part in my classes only, so you won't have to go anywhere. Number 2. Number 3, Madhav sir is starting from tomorrow, Tuesday, Thursday, Saturday, every 5 PM, finance current affairs classes, which includes RBI circulars, RBI website, all the finance current affairs news. Point number 4, I will be starting the government schemes classes from the month of February 2026 for the 2026 exam cycle. Right? Nahi, if you are following Madhav sir's RBI current affairs, finance current affairs class, then you don't have to even touch the RBI website because he is covering all. हाँ जी, current affairs for 2026, the people who are targeting 2026 exam, you need to cover current affairs from January, because अभी next 6 महीने में कोई एग्जाम नहीं होने वाला। Yes, RBI website classes will be provided here only, Latesh. Tuesday, Thursday, Saturday, 5 PM. चलिए जी, so let's wind it up, my dear friends. So I hope you guys have enjoyed the class. I hope you guys have learned something from this particular class. I wish and I hope to see you लाइव इन एवरी क्लास, राइट। अब ये जो क्लासेस है, सिलसिला है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके 2026 के सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते। रिपोर्ट्स पे भी आएंगे दोस्त, रिपोर्ट पे भी आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जब तक कि 2026 के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक कि मैं, माधव सर और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और या जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, जाने से पहले। माई नेम इज मनीष मिश्रा, माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। माई नेम इज मनीष मिश्रा एंड आई हैव बीन mentoring, providing guidance to the candidates who have been preparing for RBI Grade B 2026 from the last 6 years, right? And
पढ़ाते हुए मेरे को टोटल करीब 15-16 साल हो चुके हैं, राइट? एंड yeah, that's all for me. And more than 500 plus candidates I have sent to RBI, and I say it very proudly, and I don't have any क्या बोलते हैं, I don't have any hesitation in saying that, right? I have sent more than 500 candidates to the RBI, NABARD and SEBI. ठीक है, चलिए, let's wind it up. I'll see you in the next class, that is on Monday. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.